Hello and welcome to the Stock Markets with KR. I am your host UR, and today we have KR, who is the host of this channel, actually as our guest. And today we are going to talk to him about something which is totally different: foreign exchange trading. KR, what is foreign exchange trading all about? Thanks, you are. It's great to be here back on my own channel. And so basically, FX trading, Forex trading, all of this is basically when you're trading currencies. जब हम currencies जैसे USD INR, GBP EUR ऐसे सारे जो currency pairs होते हैं, when we're trading those currency pairs, that's when we are doing FX trading. In terms of usage, in terms of analysis, it's very similar to stock market. हम लोग जो यूज टू है, जैसे मैं निफ्टी देखता हूँ, हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट except it works in slightly different ways. So people also trade currencies just like they trade stocks, and yeah, that's what FX trading is about. Yeah, I think you, like a true pro, you have responded to the answer without, people, novices like me understanding anything. Foreign exchange trading means GBP, INR, and all that. What is GBP? What is INR? So INR is Indian rupee, GBP is British pounds. So इसको ट्रेडिंग कैसे होता है इसका एक्चुअली स्टॉक मार्केट आई नो बिकॉज पीपल यूज टू डू इट इन पिट्स अर्लियर डेज बट इसमें क्या है एक सामने सामने पैसा फेंकते हैं कि व्हाट इज इट पैसा तो फेंकते हैं, तो जो पैसा फेंका जाता है उसमें से आप कितना उठा सकते हो उसके ऊपर होता है ये. Oh. And see, I will show you. We'll use the drawing that is there here. So basically in FX trading, okay, we'll take the example of USD INR just because it's easier सबके साथ relate करना. Now here USD INR में we can see there are two currencies, right? एक USD है, एक INR है. तो ये हो गया हमारा डॉलर, एंड ये तो हमें मालूम ही है रुपया हम हमारा, राइट? सो दिस हियर डॉलर एंड दिस हियर INR make what is called as a currency pair. और ये पेयर्स ट्रेड होते हैं. ट्रेड कैसे होते हैं? अब अगर मुझे लगता है, लेट्स से आई फील दैट डॉलर माइट स्ट्रेंथन, अगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, देन आई विल बी गोइंग लॉन्ग यूएसडी आईएनआर. एंड अगेन, हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी डिसाइड दैट? ऐसे जो चार्ट्स रहते हैं, सेम कैंडल स्टिक चार्ट्स, बार चार्ट्स, यू कैन यूज विच एवर वंस यू वांट. यहाँ पे मैंने डेली चार्ट रखा है कैंडल्स का, यूएसडी आईएनआर का. सो बेसिकली लेट्स से आई फील दैट, मैं जूम आउट करता हूँ, आई फील दैट ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जोन था यूएसडी आईएनआर के लिए. यहाँ पे जब आया था 72 के आसपास, देन मे बी इट वाज स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक एनी अदर शेयर. ओके, यहाँ पर हम यूएसडी आईएनआर ले रहे हैं, करेंसी पेयर ले रहे हैं, इसको स्क्रैप करके चलो हम समझते कि ये रिलायंस का स्टॉक है. मुझे ऐसा लगा कि रिलायंस 72 पर आया है, जस्ट प्योर एग्जाम्पल सेक, और अच्छे सपोर्ट जोन में ऊपर जाएगा, एंड आई बाय इट. वैसे ही हम लोग यूएसडी आईएनआर करते हैं. नाउ दिस माइट सीम अ लिटिल वर्ड्जी, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा अभी थोड़ा, पर थोड़ा सा स्लो डाउन करके आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, उसका क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी पेयर्स. करेंसी पेयर्स एक्चुअली लगता है कि यस यू आर. या यू आर सेइंग यू विल गो लॉन्ग तो ये क्या जैसे मैंने रिलायंस के 25 शेयर लिए 50 शेयर लिए तो इसके भी यूएसडी आईएनआर का क्या स्टॉक रहता है कि हाउ इज इट डन सो यूएसडी आईएनआर में भी लॉट साइजेस और सब रहते हैं सो डिपेंडिंग इट ऑन. इज फ्यूचर एक्चुअली Yeah, futures trading and spot trading, there are both the things that you can do. But for beginners, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वो सारी चीजें फिलहाल तो साइड पर रखते हैं, पहले समझते हैं एग्जैक्टली है क्या ये बट चीज. हाउ डू यू train a person that means you have already learned all about all this Yeah, so if so what do you do actually? So we will come back to this, yeah. but I wanted to know, let the viewers know, why are you so busy and what are you busy with also, apart from this foreign exchange trading that you are showing us. Yeah, so here what I'm showing you, xm.com/hindi webinars. And if you look at this is what I've been busy with. XM is a global FX trading platform, और मैं इनके लिए webinars लेता हूँ for their clients. So I'm an educator here, and you can register for these webinars again for free.
ओ फ्री में है। फ्री में है बिल्कुल, तो आप देख सकते हो सारी चीजें कवर्ड है. वी कैन सी दिस इज द शेड्यूल फॉर अक्टूबर, November, and everything is here. Okay, everything, trading psychology, some trading setups, and we've got some indicators here. और दिसंबर तक रहेगा ये. Oh, so समझो, if I have done technical analysis course from some people, and I have done, say I have in-depth knowledge of all this, can I immediately start trading in forex? सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट. वही चीज पर मैं आ रहा था Oh, कि okay. एक्चुअली क्या होता है, मतलब व्हाट इज फंडामेंटली डिफरेंट इन करेंसीज दैट इज नॉट रियली वेरी इजी फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड. अभी सच बोलूं तो हम जो शेयर्स ट्रेड करते हैं दोज आर आल्सो एग्जैक्टली द सेम. सो व्हेन वी लेट्स से आई एम बाइंग टाटा मोटर्स शेयर्स या टीसीएस शेयर्स लेते हैं, थ्री थ्री लेटर है इसके लिए, इजी पड़ेगा. मैं टीसीएस शेयर जब खरीदता हूं, ठीक है, व्हेन आई एम बाइंग टीसीएस शेयर्स, जब टीसीएस के शेयर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं सामने क्या दे रहा हूं उसके सामने? सामने you are giving money, आई rupees. एम गिविंग रुपीज, राइट? सो इफ वी वर टू राइट दिस इन अ पेयर फॉर्म, देन क्या होगा? फॉर एवरी टीसीएस दैट आई एम बाइंग, मैं आईएनआर दे रहा हूं. सो Oh, जस्ट लाइक दैट, इन एसेंस करेंसी पेयर्स कैसे काम करते हैं? वी आर बाइंग द फर्स्ट पार्ट एंड वी आर इम्प्लिसिटली सेलिंग द सेकेंड पार्ट. इम्प्लिसिटली सेलिंग क्यों? इम्प्लिसिटली सेलिंग इसलिए क्योंकि हम अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वो बेचने जैसा ही हो जाता है. so the exchange rate for TCS INR pair is 1 TCS is equal to 3700 INR. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो Oh, so I have already learned this the concept of exchange trading. या सो इट इनफैक्ट ये जो करेंसी पेयर्स का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग. अब टीसीएस का ही हम लोग सिस्टर कंसर्न ले लेते हैं, टाटा मोटर्स. लेट्स से आई वांट टू बाय द न्यू टाटा पंच जो अभी रिसेंटली निकली है, तो मैं वो खरीदना चाहता हूँ. समझो 7 लाख की गाड़ी है वो. आई एम बाइंग द कार, और मैं सामने क्या दे रहा हूँ? INR. आईएनआर, राइट? So in the same way, in this case, in FX trading, what I'm doing is I am buying, let's say, USD, and I'm selling, implicitly selling INR. But if I want to buy INR instead of USD, is it possible? Yes, it's possible. I mean, you are ultimately trading it. So whether you go long on USD INR, or if you go short on INR USD, the outcome will be the same. Because अगर आप long जा रहे हो USD INR के, let's say, and please bear with me for a minute, this might seem a little longer, but this will give you good understanding. ठीक है, मैं लॉन्ग जा रहा हूं. इन दिस केस लॉन्ग आई एम गोइंग ऑन यूएसडी आईएनआर. लेट अस से दैट डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, आई एम गोइंग लॉन्ग द डॉलर, दैट्स व्हाई माय पोजीशन विल गो अप, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जाएगा. वही हिसाब से अगर डॉलर वीक हो जाता है, इट बिकम्स वीकर, दैट मीन्स माई पोजिशन ऑफ यूएसडी आईएनआर विल बी in a loss because I'm long USD INR. USD INR will fall. Now, similarly, and this is where the difference comes in. Let's say INR becomes weaker. डॉलर तो वही का वही है, बट INR वीकर हो रहा है. Then what do you think will happen to USD INR? Yeah, it will go up. Right, it will go up. Similarly, if INR strengthens, USD INR will go down. So this is the main crux of the matter, that हम जब TCS INR खरीद रहे हैं, तब वी आर नॉट ऑलवेज कंसिडरिंग द आईएनआर इफेक्ट. हाँ, इफ यू ट्राई टू कोरिलेट, देन आई एम श्योर यू विल फाइंड सम कोरिलेशन विथ डॉलर रुपी एंड इन आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि उनका फॉरेन डीलिंग होता है ज्यादा. बट इन इट्स ट्रू सेंस, हम लोग रुपया रुपया जहां पर भी जाता है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. But when we are talking about foreign currencies, especially foreign currency pairs, at that time it becomes very important to consider the other side of the equation as well. मैंने सुना था, दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन के आर. मैंने ऐसा सुना था कि इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रेंड, ही हैज टू गिव हिज लॉगिन पासवर्ड टू
my friend, even if he wants to use the washroom for 2 3 minutes, is it that volatile, that market? So yeah, I mean volatility तो रहती है, volatility रहती है definitely in any market, especially in the case of FX market, because FX market का daily turnover is this much, Oh, $5 trillion a day. For but context, this is on NSE. no, this is not on NSE. Actually, Oh, NSE कैसा है? NSE, yeah. BSE, हमें अगर NYSE भी लेना है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर से डील करता है, these are all centralized exchanges. बट FX का एक अलग है, इट इज एन OTC मार्केट सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि पहले इंटर बैंक मार्केट आता है, तो मतलब जो बड़े बैंक्स है वो अपने साथ करते Yeah. हैं, उसके नीचे उनके पार्टनर्स रहते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द वेबिनार्स दैट आई टेक फॉर XM, उसमें XM इज अ ब्रोकर. सो Okay. वैसा रहता है, और अब इनके हम बनते हैं clients. So we are actually trading with these brokers, and the brokers are a part of this interbank market, and they are connected in that way. जबकि NSE कैसा होता है? NSE यहाँ पर है मेन इंस्टीट्यूशन, और सारे लोग NSE के साथ ही डील करेंगे या फिर BSE के साथ. बट तो जीरोधा में मैं USD INR ट्रेडिंग करूँ इज बेटर, or with XM I do that USD INR trading, is that better? So they are actually completely different. USDINR in India is an Indian derivative which is there on NSE. वो फॉरेन ग्लोबल मार्केट से जरा भी रिलेटेड नहीं है, और वैसे होता है एक्चुअली. Acha, but then what is it actually? If it is USD or XM का मतलब means what is the difference between these two? Because that is where people would, I think, like to know, okay, what is the value add that NSE is giving, and or Zerodha is giving, or Upstock is giving, or any other Indian broker, and what is the value that they may get from XM by joining XM. This is for just for the information of viewers. Okay, the intent of this is not to advertise for XM, but it is only to give you education and information. uh, we are not authorized dealers of foreign exchange, neither we are authorized dealers of XM, but this is only for the purpose of giving information to you whether it is beneficial to trade via Zerodha or XM, and what are the pros and cons. Right. So thanks for that. Now, once again, clarifying XM ka, I am just an educator. I'm not even an affiliate, so I'm not linked with them. If you open an account with them or anyone else, मुझे कुछ financial gain या और कोई gain नहीं होने वाला, तो आपकी मर्जी है. Legalities और सब आप check कर सकते हो. जो main difference होता है, okay, the main difference is that the Indian FX derivatives are not worth $5 trillion. So they are not as liquid. Another thing, Indian FX derivatives are open only during the daytime. ठीक है, open only during the daytime. I 9 to believe, yeah, 5. 9 to 5 है उनका, 9 to 5. But the global FX derivative, the global FX market is actually open 24 hours a day, 5 days a week. Saturday, Sunday आराम मिलता है हम लोग को thankfully. But this is again a global market. So first a certain session starts, then a certain session starts. So वैसे कर करके actually 24 hours तक covered रहता है वो. और these are the main differences. Another difference is that Indian derivatives जो है FX के, they will only deal with INR pairs. So you will see USD INR, GBP INR, then Japanese yen, ये सारे पेयर्स दिखेंगे, बट वो सिर्फ इंडियन रुपी पेयर्स रहेंगे. इफ यू वांट टू ट्रेड नॉन रुपी पेयर्स, लेट्स से यू वांट टू ट्रेड द यूरो और यू वांट टू ट्रेड न्यूजीलैंड डॉलर, ये सारी चीजें आप इंडिया में नहीं कर पाओगे विद इंडियन डेरिवेटिव्स, बिकॉज दैट्स सिंपली नॉट अवेलेबल. सो Okay, that's very useful information, and I think now we should just give our viewers a break because maybe we can come back in the second round after a few days, because this is too much for me also to take inside. So I'm sure the same is the case with the viewers as well. So thank you, KR, for this, and maybe we will get back again
after a few days. Is that fine with you? Sure. So I think if the viewers want, this can be a short series of sorts जिसमें हम बात करते हैं what exactly is FX, how does it work, and all of that. So Correct. let me know again. Comments are open now. I also have a community tab on the channel Oh, wow. जहाँ पर मैं post करूँगा तो उस पे भी active रहना. Good for everyone, right? So yeah. Okay, great. And thank you very much, KR and the viewers, for tolerating me as the host. And we will get back to our stuff from Monday onwards, rather from tomorrow onwards, with Bazaar Ki Batein and swing trading opportunities. Until we meet again, it's over from KR and UR. Alright, that's it for this one. Happy trading. See ya.